भारत सरकारको भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान ICAR मेघालयको आयोजना तथा भारत सरकारको एपिडा प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय, सिक्किम सरकारको जैविक मिसन प्रभाग अनि मणिपुर सरकारको जैविक अभियान निकायको संयुक्त तत्त्वाधानमा कृषि उन्नति, सम्भावना, चुनौती, तकनिकी र रणनीति अर्थात् एग्री स्टार्टअप्स, प्रोस्पेक्ट्स, च्यालेन्जेस, टेक्नोलोजिज एन्ड स्ट्राटेजिजमाथि राष्ट्रिय सम्मेलन यसपल्ट राज्य सिक्किममा आयोजन गरियो। राजधानी गान्तोक स्थित मनन केन्द्रमा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रमको उद्घाटन गत 26 मई 2022 को दिन सिक्किमका कृषि, बागवानी, पशुधन, सूचना तथा जनसम्पर्क अनि मुद्रण विभागका मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माले गर्नुभयो। यस अवसरमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा सिक्किम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक अविनाश खरे, मणिपुर सरकारका अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी भाइपेई, ICAR नयाँ दिल्लीका एडिजी डाक्टर के श्रीनिवास, यस राष्ट्रिय सम्मेलनका आयोजक सचिव डाक्टर जी केडिरवेल रहनुभएको थियो। अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूमा ICAR सिक्किमका जोइन्ट डिरेक्टर डाक्टर आर लाहा, पूर्वोत्तर राज्यभित्रका ICAR का प्रमुखगण, भारत सरकार र सिक्किम सरकारका कृषि, बागवानी, पशुधन विकास सम्बन्धित विभिन्न संस्थानका प्रमुख तथा वैज्ञानिक र विषयविद, जीवी पन्त इन्स्टिट्युट, नाबार्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, NRC अर्किड पाक्योङ, कलेज अफ एग्रिकल्चर एन्ड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलोजीका प्रमुख तथा अधिकारीगण, फार्मर्स प्रोड्युसर अर्गनाइजेसन FPO का प्रतिनिधिगण, प्रगतिशील कृषक लगायत महिला स्वयं सहायता समूहको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा स्वागत सम्बोधन राख्नुहुँदै ICAR सिक्किमका जोइन्ट डिरेक्टर डाक्टर आर लाहाले आयोजित यस राष्ट्रिय कृषि उद्योग सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। I think there is a gap between the production and the marketing and agripreneurs development. So, with that idea, this conference has been organized here. I welcome one and all in this venue and in this program. I welcome Sri Loknath Sharma sir, Honorable Minister. In spite of his busy schedule, he is with us. He is spending his valuable time with us. I know, sir, for last 7 months we had so many meetings. Sir is very much concerned about the farmers and whole agriculture. So, sir is also very much anxious regarding the citrus declination as well as large cardamom declination. In so many meetings, he has showed this type of problem should be addressed. So, sir, we will try our best in this conference also and in future also, sir. Sir, thank you very much for being with us in this venue and spending your valuable time with us. सम्मेलनमा उपस्थित महानुभावलाई यस राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन सिक्किममा आयोजन गर्नुको कारण र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहुँदै सम्मेलन आयोजक समितिका सचिव डाक्टर जी केडिरवेलले सिक्किम देशको प्रथम जैविक राज्य रहेको र यहाँको जैविक विशेषता रहेको तथा यस सम्बन्धमा सिक्किमका कृषि मन्त्रीसित छुट्टै रूपमा बसेर जानकारी लिएको उहाँले बताउनुभयो। सिक्किमका कतिपय जैविक उत्पादको आफ्नै विशेषता बताउँदै र कृषि जैविक उत्पाद तकनिकी प्रसंस्करण, विपणन आदिमाथि विशेष तकनिकी सत्र रहने पनि उहाँले बताउनुभयो। Why we organize this conference in Sikkim? So many people will question because national conference, why we organize in Sikkim? There is 2-3 key important points we have considered for organizing this program in Sikkim. Particularly it's Northeast by and large, because we want more people on Northeast, because by and large Northeast there is a lot of potential for agri startup, because by and large here agriculture is a major activities. So there is a lot of potentiality in agri-business in Northeast, particularly in the processing sector, because other parts of India the processing is more than now 20%, even primary processing, secondary processing around 20%, remaining around 60-70% are unprocessed. But this region even less than 5% are processed. So unprocessed. So a lot of processing industry has come. There are many specialty product Northeast. Special product, that product won't get in other parts of India. So for example haldi. So the haldi which is for other parts of India only 5% curcumin. Here turmeric haldi mein
up to 7-8% curcumin content, the active component. So this is the medicinal value. So however healthy, it's not as a spices in the food. It should be nutraceutical value. So similarly, I think I can say n number of examples I can quote. So these are the specialty product in Northeast. So but however, the entrepreneurship, if you see the entrepreneurship point of view, the growth of entrepreneurship, agri-business entrepreneurship is at 10% in other parts of India, but here is very less than 10%. If you see number of startups in whole Northeast, very, very less number. Because we are working in whole Northeast, it's very, very less number of agri startups. Now maybe around 25, 30, we are counting maximum agri startup. Others are in MSME categories, small and medium micro enterprise category. So this is the time of the need of the hour to sensitize, to promote agri-business Northeast. Specifically in Sikkim, specialty product is very, very important because it is a strategic location. Sikkim is a strategic location. There is international boundary, Bhutan, Nepal and China. And also the specialty product, particularly for example, is organic. I think the Sikkim is the first organic state, everyone knows. So that is a specialty product in this Sikkim. And the other important things here, the specialty product, particularly Sikkim, I find the buckwheat and job tears. I think this is very, very common in Sikkim, sir. Buckwheat and job tears. See, recently, I think probably everyone knows International Year of Millet 2023 as announced. So the millets, other millets, everywhere, all over India is common. But the buckwheat and the job tears is not available in other parts. Only in Sikkim is a major culture. So recently we have procured buckwheat 10 kg for research from here only. So these are the specialty in Sikkim. सम्बोधनको क्रममा आइसिएआर नयाँ दिल्लीका एडिजी डाक्टर के श्रीनिवासले कृषि उद्योग देशको प्रथम दर्जाको उद्योग बताउँदै उहाँले देशमा गुणस्तरीय अन्न बाली, सागसब्जी र कृषि उत्पादमाथि प्राथमिकता दिएको साथै प्रचुर उपार्जन गर्न असल तकनिकीको प्रयोग गरी विविध कम्पनीहरूले एकरूपताको साथमा योगदान दिएको उहाँले बताउनुभयो। तथा सिक्किम सरकारले चालेका कार्यक्रम सहित वान फ्यामिली वान एन्टरप्रेन्योर योजनाको प्रशंसा गर्नुभयो। Today we have gathered here for a very important aspect which is close to my heart, not only my heart, but also Honorable Prime Minister's heart, that is mostly development of entrepreneurs and different aspects of development of Northeast India. Both of these are the priorities of Government of India at this point of time, and a lot of schemes have been launched by Government of India and also by the Ministry of Agriculture. Specifically, I'll talk about Ministry of Agriculture. In Government of India, Startup India scheme is there, which has been very vibrant, and Government of India, a lot of entrepreneurs in India are showing a very, very big visibility and impact in the economy as well as in the whole startups to India in the world. We are third in the world if we see the number of startups that we have been developing, which is a very big achievement. And all these things happen when we talk about a startup of entrepreneurship. We try to converge it into science and technology, which is a backbone of any, which is going to be a backbone of any startup. If we really wanted to bring an impact, definitely a backbone is required from the scientific point of view. Whatever the product and services that we are going to develop in the whole scenario, it has to be backed by the science and technology. Lot of things have gone into that. Agriculture, as you know, is a very important aspect of our life. We take it as a culture in India, but definitely it needs to be, it has been supported by the scientific knowledge throughout our journey, especially post-independence, when we were really starving for the food as an Indian nation. Today we are surplus in India, and all these things happen through scientific, science-backed technologies that has been adopted by very recipient farmers of India. And not only that, today we are in a stage where we actually has to move in from a different angle. Till now we had been given, we were giving importance to the quantity so that we can feed our teeming millions. Now we are in the surplus. Now we have to move into the quality, into the product development, into the processing part. And here the lot of again support is required from
science-based entrepreneurship, and that is what we actually looking into this. विशिष्ट अतिथिको आसनबाट बोल्नुहुँदै मणिपुर सरकारका अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी भाइपेईले सिक्किम देशकै प्रथम जैविक राज्य रहेको बताउँदै मणिपुर सरकारले पनि आफ्नो भूमिलाई जैविक बनाउन विविध मार्गदर्शन तयार गरी जैविक तकनिकीमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। The state of Sikkim, as we all know, is the first organic state in the country, and we in Manipur we are focusing on taking organic forward in Manipur, primarily because this specialized field offers a lot of new opportunity to many of us who have limited areas for cultivation, because this niche area caters to certain segment of the market where the farmers can best get better remunerative prices for the same level of work. And therefore it is our endeavor to do this in a big way. We cannot even think of competing with the large scale production that many other states in the country are capable of. We cannot think in terms of the quantum of the production of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana or Andhra or various other southern states. As a state, we are very small. On top of it, many of our areas are not amenable to cultivation, and therefore the very limited area we have, we want to take up very specialized focus activities. And we feel that Sikkim has led very ably in this area. And this National Conference on Agriculture Prospects, Challenges, Technologies and Strategies will give us a very big informative exchange of ideas, experiences and knowledge which will take us forward. Therefore, it is not just me coming here to attend. I am heading a team of farmers, of farmer producer organizations who have come with me all the way from Manipur, and they will be taking part not only in just the 2 days conference, but also we will be supplementing this with visits to some of the key organic farms of Sikkim, so that we take back a lot of knowledge. In brief, we are here basically to learn a lot from what Sikkim has already achieved. I am so happy that the organizers have, in addition to releasing the souvenir, they have released 2 very important books. One I saw is on the prospects of organic and related activities in the Northeast, written by many people of experience. I was glancing through that, and the other on specifically a book on training. And I think that this will be very, very important for at a stage where my state presently is. The same may be true for many of the other states in the Northeast. यसरी नै सम्बोधनको क्रममा सिक्किम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक अविनाश खरेलले देशको भविष्य कृषि, बागवानी, पशुधनसित जोडिएको बताउँदै आजको वैज्ञानिक तकनिकीको युगमा सबै खाद्य प्रकारलाई प्रसंस्करण र विपणनमा बढावा दिन विशेष पहल अघि बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। देशमा अन्नको भण्डार भर्नमा साथै स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर र बेरोजगार मुक्त भारत बनाउन कृषि नीति र तकनिकी सुदृढ बन्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो। India is predominantly an agrarian country. More than 55% workforce in agriculture and 16.5% of gross value added contributions to the Indian economy. Ladies and gentlemen, if you remember, it is the only sector which has reported positive growth during COVID-19 pandemic. Similarly, in the northeastern region, agriculture being the major north subsistence occupation of tribal population provides livelihood support to 70% of the region's population. It produces not only 1.5% of the country's food grain products such as rice, maize, turmeric, ginger, etc., but continues to be a net importer of food grain even for its own consumption. Diverse agroclimatic conditions, varied soil types, and abundant rainfall have endured
northeastern region with promising horticulture and value-added products that can be marketed within country and indeed abroad. In spite of having a reservoir of natural resources, natural resources like soil, water, vegetation, hydrocarbons, the northeastern region is underdeveloped because the resources are being indiscriminately exploited and mismanaged, thereby leading to a depletion of the very assets that are usually highlighted as triggering the greatest potential for the growth and development of the northeastern region. कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा मुख्य अतिथि कृषि मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माले सिक्किम राज्यमा यसपल्ट राष्ट्रिय कृषि उद्योग सम्मेलन आयोजन गरिएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सिक्किम सरकारले चालेका महत्त्वपूर्ण कदम र सरकारी योजनामाथि प्रकाश पार्नुभयो र उहाँले सबैलाई सतर्क गराउँदै भन्नुभयो, जैविक खेतीमा धेरै प्रकारका रोग र किराको समस्या छ अनि पशुमा धेरै प्रकारका खतरा रोग लागि मृत्यु हुँदैछन्। यसको निम्ति कृषि र पशुधन सम्बन्धित भारत सरकार र राज्य सरकारका सबै संस्थान एकबद्ध भएर यस समस्याको निराकरण गर्न अघि आइदिने आग्रह गर्न। आप सब वाकिफ है कि कृषि के बगैर दुनिया जीवित नहीं रह सकता, इसलिए हर हालत में हमें कृषि की अतुल्य महत्व को समझते हुए अनाज, सब्जियों, दाल एवं अन्य खाद्यान्न उत्पादन के कार्य में वृद्धि लाना जरूरी है। ऐसी बृहद कार्यक्रम से हमारे विद्यार्थी युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। वैज्ञानिकों और विद्वान लोगों की इनपुट्स से कृषि में और तरक्की करने की शक्ति हमें ज़रूर मिलेगी। आज सिक्किम सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई सारी योजनाएं आरंभ की है। राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ जी के परिकल्पना की बदौलत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना आरंभ किया गया है, जिसके तहत उन्हें प्रत्येक अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए आकर्षक वित्तीय सहायता मिल रहा है। वह भी सीधा बैंक खाते में जमा हो रही है। उदाहरण के लिए प्रति किलो कार्डमम अथवा इलायची में 100 रुपया मिलती है। इसी मंच पर मैं ICAR की संज्ञान में लेना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी सिक्किम में एक ICAR है जो अनुसंधान हमारी खेती किसान में जो बीमार होती है उसके लिए एक भारत सरकार की महत्वपूर्ण संस्था हमारे यहाँ पर है। हमारे लहाजी भी है, वहाँ काम कर रहे हैं। मैं ये बहुत सारे फसल में अभी रोग बीमार शुरू हो गया है, वो बीमार को ठीक करना हम बहुत साइंटिस्ट लोग हैं यहाँ कृषि के लिए। हम लोग भारत नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमारी सारा स्टेट में, सारा विश्व में मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बीमार आगे आ रहे हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी हमारी सिक्किम में पीगरी में एक रोग आया, उनको बीमार शुरू होता है, तुरंत वो मर जाता है। एक किसान उनको खड़ा करने के लिए 100 केजी 50 केजी का बनाने के लिए उनका बहुत महीने लगता है और बहुत खर्च होता है। तो अगर वो तुरंत वो नुकसान होता है तो हमारा किसान को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए ये सारे संस्थाएं जो भी हो, ICAR हो और जितना भी संस्थाएं हमारे यहाँ पर सिक्किम में और अन्य राज्य में हो, राष्ट्रीय स्तर में हो, अभी हम सब लोग को एक मद्देनज़र रखते हुए कैसे भी हो ये फसल में जो बीमार आते हैं, जैसे अभी मक्की में रोग लग रहा है, हमारी सिक्किम में बड़ी इलायची में, अदरक में, जो हमारा सिक्किम का शान था संतरा, ऑरेंज, मैंडरिन था, अभी वो पूरा नष्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से ये बड़ा मंच हमारे दिल्ली से आए हुए हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मणिपुर से हम बहुत आपको खुश लगा कि आप भी यहाँ पर ये मंच में आए और आपका अनुभव शेयर किया। तो एक सोचने का बात है, हम लोग बहुत सारे यहाँ पर साइंटिस्ट है, हम लोग उच्च अधिकारी है, तो ये सारा चीज़ अगर हम लोग कोशिश करके आविष्कार करके इनको रोकथाम के लिए कुछ उपाय हम लोग निकालते हैं और
जो अभी डिक्लाइन हो रहा है, जो प्रोडक्शन, जैसे हमारे सिक्किम के मैंने बोला ऑरेंज के कारण हमारे बहुत सारे फार्मर्स का घर चलता था, लेकिन अभी वो कम हो रहा है। तो इसमें भी आप लोग को आगे आकर हमारी संस्थाएं में काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम हमारी सरकार, राज्य सरकार में अदरक, हल्दी, बकव्हीट, कीवी, कैबेज, कैरट, कॉलीफ्लावर, चिल्ली पेपर, रेडिश में हम लोग आकर्षक वित्तीय राशि मिल रहा है। ये हम लोग किसान को इनकरेज करने के लिए कर रहे हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल, हम लोग ने दूध में हमारी सरकार, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रति लीटर 8 रुपीस इंसेंटिव दिया। 1-1.5 साल के अंदर हमारा वो दूध उत्पादन में 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। पहले 30,000 लीटर प्रतिदिन होते थे, तो अभी 65,000 लीटर पर डे उत्पादन आगे आ रहा है। अब पहले हम सिलगुड़ी से दूध लेकर यहाँ पर हमारे उपभोक्ताओं को सेल करते थे, देते थे। तो अभी हमारे मिल्क, आज सुबह मैंने बात किया, हम लोग अमूल को दूध दे रहे हैं, हम लोग यहाँ से सिलगुड़ी व्यापार कर रहे हैं। तो हमारे कृषक को अगर जहाँ से फ़ायदा होता है, वहाँ कोई नुकसान नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिक्किम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी हमारे सिक्किम का है। सिक्किम फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, यहाँ का हरियाली, यहाँ का वातावरण, एग्रो टूरिज्म में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग गांव-गांव में होम स्टे, हमारी सरकार ने सारा गांव में जहाँ पर खेती किसान अच्छी तरह से होते हैं, वहाँ पर होम स्टे सैंक्शन करके हमारी फार्मर्स को वहाँ पर देकर टूरिस्ट वहाँ पर गांव में आकर अपना होलिडे मान रहे। यस राष्ट्रिय कृषि उद्योग सम्मेलनमा मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिको बाहुलीबाट ICAR द्वारा तयार विविध पुस्तकको लोकार्पण गरियो। यी पुस्तकहरू थिए सोभेनियर्स अफ नेशनल कन्फरेन्स, एग्री-बिजनेस अफ नर्थ इस्ट इन्डिया, एग्रिकल्चर बिजनेस अपर्च्युनिटी इन इन्डिया, ट्रेनिङ एन्ड इन्टेग्रल पार्ट अफ फार्मिङ। यस अवसरमा सिक्किमका कृषि मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माले मिडियासित अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। र विशेष गरेर हाम्रो सिक्किमको जति FPO भयो, हाम्रा कृषकहरू हुनुहुन्छ जसले व्यापारहरू पनि गर्नु हुँदैछ, अहिले उहाँहरूको लागि एउटा लिङ्केज गर्ने, उहाँहरूले बाहिर कसरी व्यापार गर्ने, हाम्रो यहाँ प्रोडक्सन भएको सागसब्जी होस् या कुनै पनि खाद्यान्न होस्, यसलाई व्यापार गर्ने एउटा ट्रेनिङ, इन्टरप्रेन्योर बनेर, जस्तै अब एउटा धान, कोदो, मकै छ भने त्यसलाई कसरी प्रोसेस गरेर प्याक गरेर मार्केटमा पुर्याउने एउटा लिङ्क गर्ने, अनि यो एउटा अति नै राम्रो हाम्रा कृषकहरूलाई फाइदा हुने कुरा हो। यसै कारण आज धेरै स्टुडेन्टदेखि लिएर हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू सँगसँगै हाम्रो FPO को धेरै सदस्यहरू पनि आएर भाग लिनुभयो र एउटा राष्ट्र स्तर लेभलको यो कार्यक्रम थियो। यो आज र भोलि चल्नेछ, जसबाट हाम्रा सम्पूर्ण सिक्किमे कृषकहरूलाई फाइदा हुनेवाला छ, ताकि उहाँहरूले सिकेर भोलि हाम्रो यहाँको उत्पादन भएको थोक राज्यमा अनि अन्य राष्ट्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार गर्ने एउटा लिङ्क बनाउने एग्री इन्टरप्रेन्योर, एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर जो पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, इन्टरप्रेन्योर कसरी बन्ने, हामीले उत्पादन मात्रै गरेर बजारमा पुर्याएन भने हुँदैन, कसरी बजारमा पुर्याएर व्यापार गर्ने, यो विषय लिएर यो एउटा गोष्ठी, एउटा कन्भेन्सन जस्तो राखिएको छ। यही कुराबाट हाम्रो सिक्किमको फार्मर्सलाई फाइदा हुन्छ।